Yes. So in this question, in this list, if you have written list -5 to 5, and if the step value is not mentioned, by default, the step value will be 1. Now we have to make cuts. Okay, if minus is written in the start position, then of course that means we have to take the negative indexing. The negative indexing, that means indexing from right to left. Okay, in that case, which will be the starting cut? Starting cut will be -2. -5. So this index position, if you are considering from right, then it will be -5, and if you are considering from left, then it will be third position. This will be your start. Okay. Now your ending is mentioned as 5. In which direction you will be going for slicing? Because step value is positive, so you will go and progress from left to right. अगर minus होता तब right to left slice बनता है, ठीक है? But because this step value is positive, so you'll start from start position and you will try to reach the end position by going from starting from start position and progressing towards right side with this increment value. Okay, but what is the end position? End position is given as which one? 5th. If the indexing is given as positive, you will consider the positive indexing. So that means this value is your end marker. However, you will go till which position? किस position तक जाएंगे? When you are going from start to end, whichever comes in that direction towards the end, whichever index position is just before the end, क्योंकि end is not included, right? So which position will be that? That will be inclusive of -5 because start is always inclusive. And end के direction में जाते वक्त, if we are going towards end, in that direction, whichever comes just index position, whichever just comes before that end marker, उस पे जाके that we will stop and we will include that as well. So this will also be included. ठीक है? And because you are going from left to right, the first one to be written will be 82, the next one to be written will be 85. So your final list that will be generated, new list that will be generated will be 82 and 5. ये बताओ देख के 1 3 6 82, चलो इसको कर भी लेते हैं. Let us see if this is consistent. Okay, L is equals to 1 3 1 3 के बाद क्या? 682 5 7 682 5 7 1192 1192. Okay, now you will print L -5 to 5. Okay, 82 5 ही आ रहा है. Now you tell me, is it clear to all? विष्णु प्रिया बताओ देख के. अच्छा, you mentioned that option only. Sorry. हाँ, you are correct. 82 and 5, third option. All of you, Priyanka, Kirtana, Akhila. Okay. Okay, ठीक. अजय. समझ आ गया सर. गुड. हाँ, इस तरह का आवाज में बुलंदी होना चाहिए. मुझे भी. Great, excellent. By the way, how is your health? मस्त. सही है, चलो. Okay. अच्छा, मान लो इसमें if I would have written 1 की जगह में ये सेम क्वेश्चन में, in the same question, if I change it to, let's suppose ऐसा कर देता मैं तो print L
-5 क्या आता? समथिंग एरर क्या होगा? Will there be error? I'm just asking. Anyone? अच्छा, कीर्तना believes error. ठीक. Priyanka believes no error. Priyanka, what do you think then output should be? देखो, starting और ending marker तो वहीं लगेगा, because starting and ending position you have given the same. Now what you have said, you starting from start index. अच्छा, starting from start index, देखो इधर प्रियंका pay attention. Starting from start index, you have to reach end index. How? By moving one left each time. -1 का मतलब क्या है? You will start from -5. Next index position will be -6. Next index position will be -7. In that fashion, you have to reach index position 5 or -3. Can you do that? मतलब समझो, starting marker I have put, ending marker I have put. Now, because the step value is negative, that means you will have to go from right to left, starting from start position. So -5 से start होके -1 करोगे, -6, -1, -7, या even if you consider third position, -1 करोगे, 2, 1, 0. Will it be possible ever to reach 4 towards this direction? क्या ऐसा हो सकता है? Starting from -5, if you keep on decreasing the index values by 1, index position by 1, will you ever reach -4? -1, -6 will -1, -5, -1 will give you -6, -6, -1 will give you -7. Will you ever reach -4? कभी पहुंचेंगे वहां हम लोग? नहीं सर. नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा? It won't give Error. error. नहीं देगा, error नहीं देगा. It will generate if, नोट कर लो ये, if slicing not possible, then slicing not possible, then error में आएगा आंसर no error, because if slicing is not possible, then an empty list, if originally it was a list or a dictionary, is returned. ठीक है? अगर slicing possible नहीं होगा तो it will return you an empty list. It will not give you an error. Clear? Everyone? बताइए. Okay. ठीक है. Anant, you are there, hopefully. Yes, sir. Okay. चलो, ये हो गया. Now we'll start with I'll go to previous pages and I'll make it, इसी में continue कर देते हैं. Class 29 and 30. Okay.
बाकी क्वेश्चंस बन जाएंगे. शैल आई सॉल्व? अच्छा ये बताओ 7 से लेके 10 तक में one more question I will solve. Which one should I solve? Tell me anyone and I'll solve one more question of slicing. जब कंफर्टेबल हो तो ये भी बता दो, नहीं करूंगा. 10th वाला. 10th वाला देखो, स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ मार्क होगा? 1 पे, विच इज इंडेक्स पोजीशन 1. स्टार्ट विल बी दिस. ठीक है. एंडिंग पोजीशन विल बी -2. -2 इज वेयर राइट साइड से यानी कंसिडर हो रहा है बिकॉज इंडेक्स इज देयर. तो एंडिंग विल बी मार्क्ड हियर. ओके. नाउ अब तुमको स्टार्ट से एंड की तरफ जाना है. ठीक है. एंड स्टेप वैल्यू इज 1. तो कुछ नहीं दियो तो 1 है. 1 दे रहे हो मतलब क्या? यू हैव टू गो टू राइट साइड. तो इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इंडेक्स पोजीशन, दिस वैल्यू, एंड यू हैव टू गो टुवर्ड्स दिस वैल्यू. ठीक है. तो if you are starting from here to here, because index this step value is 1, and then what you will do is you will stop. जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, स्टार्टिंग एंडिंग मार्कर जहां है उससे पहले एक रुक जाओगे. तो दैट मींस यू विल स्टॉप हियर इंक्लूडिंग दिस -3. ठीक है. तो -7 से लेके और ये 1 से लेके यहां से इंक्लूडिंग 4.5 to 10, all the values will be there in the टपल. याद करो क्योंकि ये टपल पे बन रहा है तो टपल जनरेट होगा. ये लिस्ट का क्वेश्चन था इसलिए लिस्ट जनरेट होगा. यहाँ लिखा है ना, रिमेंबर दैट स्लाइसिंग ऑफ द टपल गिव्स न्यू टपल एंड स्लाइसिंग ऑफ द लिस्ट गिव्स न्यू लिस्ट. सो योर न्यू टपल दैट विल बी जनरेटेड विल बी 4.5 comma hello comma this list itself comma 7 comma 10. that will be all. Why? Because starting was 1, ending was -2. स्टार्ट से एंड की तरफ जाएंगे, विच एवर इंडेक्स कम्स बिफोर, जस्ट बिफोर द एंड पोजीशन, दैट विल बी इंक्लूडेड. और यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो 1 के इंक्रीमेंट पे पॉजिटिव वैल्यू है तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे. ओके. अच्छा 9th वन चलो देख लेते हैं. 9th वन के लिए विच वन विल बी द स्टार्टिंग पोजीशन? -3. ठीक है. सो -3 इज वेयर हियर. सो दिस विल बी एक्टिंग एज स्टार्ट. Okay, and end is 7. Which was is 7 here? Now the question says -3 से 7 की तरफ जाना है, but step value is negative -1. That means you have to start from start index and you have to go, because index is negative, so you will go from, every time you will subtract 1 from the index position. That means you will go from right to left, and in that fashion you have to reach 7. ठीक है प्रियंका, तो व्हाट डू यू थिंक? स्टार्टिंग फ्रॉम वही -3. पुराना वाला क्वेश्चन. नहीं, पुराना आंसर क्या आएगा? एरर नहीं आएगा, बस एम्प्टी आएगा, एम्प्टी टपल. हाँ. ठीक है प्रियंका, इज इट क्लियर? बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम -3 you cannot reach 7, you cannot go in the direction of 7 because the step value mentioned has been negative. So -3 -1 will give you -4, -4 -1 will give you -5. तो यहाँ कभी पहुंच ही नहीं पाओगे. So therefore if slicing is not possible then empty list or tuple is returned. Clear है? सर 7th का क्या होगा? 7th का क्या होगा? 7th में देखो स्टार्ट पोजीशन क्या होगा? What will be the start position बताओ अजय? 6. तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखना है क्योंकि स्टार्ट वाला पॉजिटिव है तो ऊपर वाला देखोगे तो 6 यहां से इंक्लूड होगा. दिस इज योर स्टार्ट. व्हाट इज योर एंड? -9. ठीक है. -8 है, -9 मतलब इसके बाहर हो गया. तो मान लेते हैं -9 कहीं इधर है. ठीक है. तो -9 की तरफ जब तुमको जाना है उसके पहले क्या आएगा? वहां जाके रुक जाना है. मतलब क्या क्या इंक्लूड होगा? ये इंक्लूड होगा क्योंकि जिस डायरेक्शन में जाते हैं स्टार्ट से एंड की तरफ, तो जो उस एंड के पहले वाला आता है वहां रुक जाते हैं और उसको इंक्लूड कर लेते हैं. तो यहाँ पे ये यहाँ तक -8 तक को इंक्लूड करना होगा. ठीक है. और -8 को इंक्लूड करना होगा और इसको इंक्लूड करना होगा. और उसके बाद क्या है? स्टेप इज -2. तो स्टार्ट करोगे 6 से.
6 से यानी कि तुमको 0 तक जाना है, या 6 से नेगेटिव कंसिडर करोगे तो -8 तक जाना है। तो 6 से अब दो दो सब्ट्रैक्ट करते जाओ। दैट मीन्स अगर नेगेटिव इंडेक्स स्टेप वैल्यू है, दैट मीन्स यू विल गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इस डायरेक्शन में आओगे। पहला 6 होगा, उसके बाद -2 करोगे 4 आएगा, -2 करोगे 2 आएगा, -2 करोगे 0 आएगा। तो लिस्ट में क्या क्या आएगा, ये जो नया ये बनेगा टपल बनेगा, उसमें क्या होगा, -3 7, पहला एलिमेंट -3 होगा, दूसरा 7 होगा, तीसरा हेलो होगा, चौथा -5 होगा। ये बताओ, क्लियर सर। क्लियर है? ओके, ठीक। वैसे एग्जाम में बहुत सिंपल आएगा, ठीक है। एग्जाम में तुम सैंपल पेपर मैंने बता दिया हूं बिकॉज यू आर स्टडिंग। सैंपल पेपर देखोगे तो उसमें ये ऐसा मिक्स नहीं किया है, -5 से 5 नहीं किया है, वो कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा है पॉजिटिव वाला, तो उसमें तुमको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। यू विल स्टार्ट फ्रॉम वन पोजीशन, यू विल गो टू एंड पोजीशन। जस्ट टू गिव यू एन इनसाइट नॉलेज, मैंने ये तुम्हें डिफरेंट वेज दिखा दिया है, बट बी रेस्ट अश्योर्ड आपके पेपर में 99। तो आएगा ना सर? हाँ आपके वाले पेपर में तो आएगा ना? हाँ, ये हो सकता है, ठीक है। तो बस ठीक, चलो। सो इतना क्यों कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो वी आर डन विथ व्हाट यू से इज स्लाइसिंग और इससे रिलेटेड पार्ट। सो हम लोग लिस्ट और टपल एक साथ देख रहे थे। नाउ कमिंग टू कौन कौन सा फीचर देख लिया है हमने, क्या हो गया, बंद क्यों हो गया? We have seen indexing, we have seen slicing, we have seen concatenation और replication तो जानते हो, नहीं जानते हो तो एक एक लाइन में दिखा दे रहा हूं। Concatenation मतलब क्या, string में क्या होता था, add merging of two strings to give you a new string which is a merged one। तो इसमें भी you will have, let's say there are two lists, A is equals to 1 2 3, B is equals to -10 5 10, ठीक है। प्रिंट A प्लस B, क्या होगा, दोनों लिस्ट मर्ज हो जाएंगे एंड यू विल गेट अ सिंगल लिस्ट। दिस इज कॉन्कैटिनेशन। ये शशांक क्या हो गया तुमको फिर एकाएक, हाउ हैव यू रीच्ड देयर, ठीक है। आस्क मी एथिकल क्वेश्चंस, आई विल गिव यू द आंसर्स, ओके राइट। इज इट पॉसिबल फॉर टपल? अच्छा, राइट, टपल में भी देख रहे हो। अब उसके बाद फिर प्रिंट A प्लस B करोगे, तो here if you are concatenating two lists you will get a new list which will be merged first with the second, and if you are concatenating two tuples, see you are getting a merged tuple, okay। Now replication, what is replication? string में क्या होता था, हाई है, इंटीजर से मल्टीप्लाई करना हाँ सर। इंटीजर से मल्टीप्लाई करते थे तो 4 times हाई आ जाएगा, one after the other, one single new string will be generated, right? But in the same way, when you write हाँ लिस्ट दे लेते हैं, वही लिस्ट ले लेते हैं ये, चलो ये तो बना ही है, चलो टपल ही है, ओके। नाउ if you write A multiplied by 4, देख रहे हो, that you will get a single tuple where after that tuple is elements of the tuple is repeated 4 times,
ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो यू विल गेट अ न्यू सिंगल टपल. अगर वो लिस्ट होता तो तुम्हें नया लिस्ट मिलता, you would have got a new list. Let's say B is there. ठीक है. Is it clear? Replication and concatenation in the case of list and tuples. Yes, sir. Everyone, बताओ. अजय, कीर्तना, प्रियंका, सौरभ. सौरभ is not there today, I think. नेगेटिव नंबर्स के लिए देख लेते हैं. करेक्ट. एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होगा शशांक. In case of list it will be empty list, and in case of tuple it may be empty tuple. ठीक है. So okay, चलो ये भी एक पॉइंट नोट कर लो कि in concatenation in case of any sequence type, whether list, string or tuple, if you are multiplying replication, if you are multiplying with or trying to replicate it with a negative integer, then you will get an empty type of the same sequence type. मतलब string होगा तो empty string, tuple होगा तो empty tuple, and list will be there, so in that case you will get an empty list. ठीक है. ओके. राइट. ठीक है, रेप्लिकेशन देख लिया. हाउ विल इट बी एम्प्टी? देखो ना, ये दिख रहा है, कुछ नहीं है. द रिजल्टेंट न्यू लिस्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड, देखो, लेट्स से मैं उसको एक नए वेरिएबल में स्टोर कर देता हूं, x. int x करेंगे तो देखो, if I multiplied a which was a tuple, ठीक है, if I multiplied a which was a tuple, ठीक है, with -4, because negative से multiplication, ये replication is not possible, so it returned, or it generated a new tuple which was having no element inside it, which we call as empty tuple. देख रहे हो प्रियंका, only opening and closing brackets are there, nothing inside. बताओ, क्लियर? ओके. इन केस ऑफ जीरो भी, आज का क्लास तो शशांक ही ले रहा है, मैं कहाँ ले रहा हूँ. Yeah. In case of rather all non-positive integers, ठीक है, you will get an empty tuple, list or string. Okay. Right. Coming to, इन दोनों को देखने से पहले we'll see a few things which is only applicable to list. अच्छा, उससे पहले एक और चीज देख लेते हैं. modification or updation in case of list or tuple. What will happen? Will it be possible to modify lists? क्या list को modify कर सकते हैं?
Can we modify the originally defined list, उसके elements को? That means, let's say, if I have written A is equals to 1, 2, 3, can I do this? I'll go inside that variable and I'll force it to change the element at 0th index to -1. Print A. Will it give me the output as -1, 2, 3? बताइए अनंत. देखो others also. I'm pretty sure Anant has got tired today and he's taking naps in between. चलो बाकी लोग भी बताओ. पलक, प्रियंका, अजय. Is list modification of list possible? Yes, sir. Yes. तो एक yes बताने में इतना टाइम क्यों लग जाता है तुम लोगों को? Yes. Okay. ठीक है. So that means updation, modification possible. Why? As lists are mutable. Mutable means changeable. Once defined, original lists can be changed. Okay. Sir, Coming to am I audible? you are very faintly audible. बहुत आवाज कम आ रहा है आनंद तुम्हारा. Okay, sir. Check your microphone. टपल के केस में can we do this? Immutable, so no. So no. Good. A0 is equals to -1 and print A. So this will result in error as tuples are immutable. Okay. Correct? So we'll write tuples are here updation, modification, updation modification not possible as tuples are immutable. ठीक है. tuples immutable होते हैं. Now right. तो हम लोग कौन कौन सा फीचर देख लिए? देखो यहाँ we have seen indexing, slicing, concatenation, replication and mutability and immutability. ठीक है, वो भी हम लोग
देख चुके हैं. That means mutable and immutable. Right. Now we will be seeing feature which is only applicable to lists. What is that feature? Which one can you update? Lists, right? So we'll see in context of list. Okay. Adding new elements to a list to an already existing list. Already existing list. Okay. अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक साइड में ये देख लेते हैं. हाउ डू यू क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट? एम्प्टी लिस्ट कैसे बनाते हैं? क्या लिखते हैं? A is equals to opening and closing brackets. ठीक है. Empty tuple. How do you define or create an empty tuple? Open, close, Good. Anand, you have not had food today so far. No, sir. Your vigor energy level is very low. Okay. ठीक है. चलो ये लास्ट टॉपिक अभी देख लेते हैं आज. So how do you add an all new elements to an already existing list? कैसे ऐड करते हैं? Let's say a list is already existing, या even if it is empty. ठीक है. Whether already existing list का मतलब क्या हुआ? What do we mean by already existing list? Either empty or with some elements. Okay, or with elements. ठीक है. तो उसमें क्या करेंगे? What do you do? We use which method? Append method. Okay. What does it do? Append method adds one value of or one value या literal लिख दो. वन की स्पेलिंग गलत है. अच्छा, ऑन लिख दिया मैंने. गुड. ये गलती नहीं था मेरा. आई वाज जस्ट चेकिंग कि वेदर यू आर अवेक और नॉट. ओके. हाँ बस यही बाकी रह गया था. चलो ठीक है. Adds one value of any type, one value of any type at the last index position in the list. Before adding one element, the new index position is created. New index position is created. What do we mean by this? For example,
if you write, मान लो कि एक list है 1 2 3. If you, how many index positions are there? If you see the index positions, 0 1 and 2 are there. Okay, see ordinary manner में you cannot do this. ऐसे नहीं लिख सकते हैं हम लोग. Index position can't be created this way. A3 is equals to high. Okay, this will give you error as index 3 is not existing. And it cannot be created by using assignment operator. And a new index position cannot be or can't be created using assignment operator. ठीक है, तो पहले क्या होना है? Before you can add, okay, before you can add, you have to create, देखो, at the last position, any type at the last position, the last index position में अगर ऐड करना है तो you will have to create a new index position at the last which is 3. तभी वहां एक आके new value आएगा. Then only a new value will become will be coming and will be placed at that position, right? So that capability, and that can only be done by few methods. One of them is append. Another we will learn will be insert. ठीक है? Pop index position को destroy करता है. That is the reverse, Shashank. ठीक है? Right. So Sir, new, हाँ. so can we just create a new index position without like adding any element, like empty append? हाँ कर सकते हो. देखो. अब वहां पे मैंने भी ट्राई नहीं किया, but because you have asked, let us sort it out right here. B यहाँ है ना, तो B dot append. Let us see what it does. नहीं करने दिया. It takes one argument जो कि which will be inserted. That means no. Okay, sir. Okay. At one value, not at least one value only should be given. Okay. Yes. So new index position before you insert any new value in the list of any type, new value in the list of any type, can only be created using few list methods like append, which will always create a new index position at the last and will put the value that you have put here, append, comma, insert, etc. ठीक है, which we insert we will see. ठीक है, right? So यही दो को यूज करके हम लोग कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे अगर हाई तुम्हें इंसर्ट करना है, ये रिमेंबर नेवर, हाउएवर, एक और चीज लिख देता हूं मैं. दिस विल बी आवर कंक्लूडिंग रिमार्क फॉर टुडे. हाउएवर, an already existing
value or element at an already existing index can be modified using assignment operator. ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट पेज में. Another 2 minutes. Let's say you have a is equals to 1,3. Is this allowed? Hi अगर डालना चाहें. No, sir. No. All of you agree? Why no? Priyanka, why do you think Anand believes ki, I'm not sure ki whether he's right or wrong. Help me out with reason. Why do you think ki, if not, we cannot have this way? A2. अच्छा, you got disconnected. ठीक है, चलो फिर रिकॉर्डिंग में देख लेना है. What I am saying is कि if the index, देखो कौन कौन सा index position available है, 0, 1. Okay, so because index position 2 is not existing, so we know that if an index position is not existing, then you cannot use assignment operator to add a new value at the new element and create a new index position. ठीक है, वो error दे देगा. ठीक है, so this will result in error as index 3 does not exist. Index 2, sorry. Does not exist and cannot be created using assignment operator. Let us say इस line को मान लो ये line नहीं है. Okay, let's say this line is a comment line. If you write a dot append hi, and next line then you write a2 is equals to hello and print a, will there be any error or any other output? Considering कि line number 2 जिसके पहले I have given the hash sign or pound sign does not exist, it's a comment line. After that I append and then I use assignment operator to modify. I'm trying to modify the value at index position 2 and print a. What will be the output, or whether there will be error? No error. Good. ठीक है, आउटपुट क्या आएगा? 1,3 hello list. हाँ, लिस्ट में होगा, that is correct. Good. Output will be 1,3 hello and hello will be string. Okay. So why that was possible here but not here? Because when you tried doing this at this position, 2 was not existing. But then you created a new index position by adding an element high. ठीक है, पहले append क्या करेगा? एक index position बनाएगा last में, which will be 2 in this case. And at that index position 2, high will be put. Now when what we have seen is an already existing index value and or element at an already existing element can be modified using assignment operator. So now by the time you reach this line, you have, or this index position 2 is already existing. So जो high था यहाँ पे जाके add हुआ था, that will be modified and overwritten with hello. So at this line if you print, it will be 1, 3 and hello. ठीक है?
Remember, append, or for that matter insert, etc. Similar methods do not work with strings or tuples. Why? Because they are immutable, and once defined they cannot be changed or modified, as they are immutable. So once defined you cannot make any modification. Modification जब allowed ही नहीं है तो how will you add a new element? ठीक है? So at this stage we'll stop. ठीक है? आज हम लोगों ने देखा. So maybe 1 or 2 classes we will complete. Just 2 more minutes. Let me turn off the recordings.